I work very hard to make sure that my mental, physical health is doing good. I swim, I do kickboxing, I can throw a punch. If I throw a punch, you'll hear it. You cannot redo Humsafar now because I mean, it's WhatsApp aa gaya, Instagram aa gaya, har cheez aa gayi hai. And you know, mental health issues usme itne the, Sara was like, she needed mental health. Yes, you know, so ab wo cheezein you can't get away with stuff like that. I love playing the bad guy because it gives you so much room to play, you know. आप expressions के साथ खेल सकते हैं, आप अपनी back story के साथ खेल सकते हैं. But give me a good reason to be the bad guy. मैं जब भी टीवी देखती हूँ, रोना मचा हुआ होता है. औरत रोए जा रही है, हर प्ले में रोना. And I was like, जिस टाइम में हम रह रहे हैं वो वैसे इतना डिप्रेसिंग है. This is not what I want to see on screen. मुझे नहीं देखना रोती औरत. I believe आप जितना किसी को दिखाएंगे अपनी ज़िंदगी और बिल्कुल खोल देंगे, obviously लोग उस पर 10 तरह की चीज़ें, क्योंकि लोगों का काम ही यही होता है. पब्लिक फिगर हूँ, आपके अब्बा की प्रॉपर्टी नहीं है. Naveen, it's finally good to see you in person. How's it going? It's going good, and yeah, I know we've been sort of trying to align the interview for a while. You've been hard to catch up because you've been busy with जो चीज़ें हमें आप बताने वाली हैं अभी फिलहाल तो. क्या चल रहा है वैसे generally? How's life treating you? It's been great, alhamdulillah. Have absolutely no complaints. Like I was gonna say, given these times, because you know हम और आप फिर भी privileged position से बात कर रहे हैं इस वक्त, you know it's really tough for a lot of people out there. And उस हिसाब से, I mean, if you're doing well, that's a blessing, right? Yeah, absolutely. Because जिस तरह की crisis से हमारा मुल्क गुजर रहा है, having a job, having a roof over your head, having water, having बिजली, I think we're good. हम लोग तो alhamdulillah फिर भी बहुत बेहतर एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं. और मैं ये सोचती हूँ कि हमें हिट कर रहा है, ऐसा नहीं है कि हाँ, लेकिन उस परसेंट हिट नहीं कर रहा होगा, उतना परसेंट जितना एक सर्टन तबका जो है वो गुजर रहा है, जो डेली वेजेस वाले लोग हैं या जो मंथली सैलरी के बेसिस पे हैं. यू नो, आई फील लाइक एवरी टाइम आई थिंक कि मुझे हो रहा होता है कि ये ठीक नहीं हो रहा और ये कंप्लेन, एंड देन आई क्विकली रिमाइंड माई सेल्फ कि डूड शट अप, यू आर डूइंग सो मच बेटर देन लाइक 70% ऑफ द पीपल. सो यू नो, एक रिमाइंडर ज़रूरी होता है अपने आप को थोड़ा सा हिलाना कि यू हैव नो राइट टू कंप्लेन. सब सही है, सब सही है. मैं आपसे यू नो एनवियस हूँ अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स हो सकती हूँ, लेकिन एक चीज़, बिकॉज दिस वन थिंग जो मुझे ज़िंदगी में करना है और मैं कोशिश कर रही हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न योगा. Oh, and you are a pro at it. I saw like मैंने आपकी उस दिन एरियल योगा की मैंने फुटेज देखी, मैंने कहा यार ये इन्होंने कैसे किया. Practice. I've been doing floor yoga. मैं हमसफर के ज़माने से कर रही हूँ. But floor yoga is a different thing. But obviously that prepares you for aerial yoga. Aerial yoga मैं बहुत अरसे से करना चाह रही थी, but मुझे कोई जगह नहीं मिल रही थी. And then I found out yoga lift पे they were giving classes and everything. And then last year, I think in October, I started. It's been like 9 months. And it's been such an incredible journey because I feel stronger. You know, you do things and you surprise yourself. Oh my God, I just did that. मैंने flip कर लिया. I didn't know I could do that. Because so I just want to do it for the mind. I just feel it's really, really good for your mind. Yeah, it is. And you know, you feel एक तो strength एक अलग आपको मिलता है. You feel confident. You feel at peace. You know, because वो एक घंटा जो होता है, सुकून ही तो चाहिए. हाँ, एक घंटा जो होता है, आप सब अला बुला अपने आप शट आउट करते हैं और आप सुन रहे होते हैं कि आपकी टीचर क्या कह रही है, एंड देन यू जस्ट स्टार्ट गेटिंग इनटू इट, और वो आपको सब कुछ भुला देता है. सो आई थिंक यू हैव टू ट्राई इट एटलीस्ट वंस. सिर्फ योगा नहीं, मैं 50 चीज़ें और करती हूँ. अगर हम 5 टॉप 5 चीज़ें बताएंगे, अगर आई स्विम. You swim? I swim. I think it's really important. और स्विमिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपका टोटल बॉडी वर्कआउट हो रहा होता है. I do kickboxing. You know, yeah. Really? I've been doing kickboxing for like 4-5 years, and Harse used to be my trainer. He's a champion. Can you just throw a punch like that? Like, you know, I can't throw a punch on screen, but yeah, I can throw a punch. You can definitely throw. Yeah, like if I throw a punch, you'll hear it. Okay. So he also taught me self-defense
तो you know उसके अलावा I take care of my diet. हालांकि मैं बहुत जंक फूड खा लेती हूँ कभी कभार on the weekend. You know you're like बस बहुत टायर्ड हो गई, अब कुछ गंदा खाना है. But at the same time, you know you try and sort of maintain a balance. और आजकल जिस तरह की environment में हम सब हैं, stress plays a huge factor and it can destroy everything. You know आपकी सेहत ख़राब कर देता है stress, आपकी नींद ख़राब हो जाती है, आपका metabolism ख़राब हो जाता है. तो you have to make sure कि put yourself first. Put yourself first. You know सब ठीक है, काम भी करें, stress भी लें, दोस्तों के साथ भी hang out करें, but अपना ज़रा ख्याल रखना अब बहुत ज़रूरी है. अब बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल बिल्कुल. Okay, so from being a VJ, like I think most of the what you call the very important big faces in our industry started with being a VJ and then moving towards acting, ठीक है, and वो भी with a project that was your like I think मुझे लगता है history में सबसे अच्छा debut अगर आप मिला है ना, that was you got one man, you got the I role. did, I was You very got the lucky. part. Yeah. I was very lucky. No, I think lucky की चले luck तो चले लेके चला गया, लेकिन you really did justice to the character. I tried. Yeah, I think it's one of the most iconic characters on screen we can talk about. Negative उसके अंदर, ठीक है. So okay, so how was this transition for you like from being VJ to acting, because acting in itself it's a demanding job, right? Yeah, it was. I've never been afraid of camera because VJing maybe I was able to just be myself. You know, I was basically sharing my personality with the entire world. Sure. And the camera never scared me. लेकिन acting में जो transition था, that was scary in a way where I knew I was going to be judged. Yes. You know, because जब मैं VJ थी उस time पे there wasn't a lot of judgment. अब बहुत ज़्यादा हो गई है, you know, and so when I took on the part and I started getting hate mail regarding Sara, I was like, people are never going to get over the fact that this is a character, you know. So I was terrified. But at the same time, you know, it was this unbelievable thing because that opened a whole new audience for me. As a VJ, you can only target a certain age group, right? लेकिन जब आप acting में कदम रखते हैं तो बच्चों से लेके बूढ़े तक आप लोगों को देख रहे होते हैं. So you know, I suddenly had like a whole different age group coming to me and appreciating my efforts, and it felt amazing, but it was terrifying for me. But alhamdulillah, everything worked out. Talking about the hate mail that Sara got, you know, and I agree कि वो तो बहुत ही कोई टक्कर का negative character था. Yeah. And मतलब even you know like because when I met you and I was like मुझे flashbacks आ रहे थे Sara, you know, psychotic, you know, lighting that matches part, why वो वाला जो part था. So I mean अभी recently with तेरे बिन, you know, एक सबीना फारूक को बहुत hate मिला है, who was playing the quintessential हाया का character, जो मीरा मुर्तसिम के बीच की जो यूँ थी, जो एक flame है, you know. तो I think मैं थोड़ा बहुत Sara was classy though. हाया was थोड़ी सी मासी मोड़ मुझे कहूँगी, लेकिन Sara was really classy, but it was a negative character in the same placement. तो सबीना ने भी on screen आके कहा था कि it's very difficult लोगों को समझाना, and why is it difficult कि यार ये character है, ठीक है, मुझे character की तरह देखिए. She said that she got a lot of hate mail for you know like कि लोग माँ बाप पे आ जा रहे थे, गालियाँ दे रहे थे, trolling कर रहे थे. So did you face this similar sort of I had people on street coming up to me and being like, leave Khirad alone, and आप ये क्यों करिए? And I was just like, okay, what is wrong with you? Like that scared me. That was scary. I was like, लोगों को क्या इतनी अकल नहीं है कि ये किरदार है और मैं किरदार play कर रही हूँ? They got so into it. So yeah, you know, when you play something, when a story clicks with the audiences and they get super involved in it, तो फिर वो उनको थोड़ा सा वो fine line जो है वो शायद blur हो जाती है. But yeah, back then it was a different game, you know, because अब social media पे लोग इतना ज़्यादा active हैं कि they can harass you on several platforms all together. You know, back then social media इतना ज़्यादा activate नहीं था. Aren't you happy about that? वरना अगर इस सारा अगर इस modern time से play की जाती, then I think वो आपका आया से बुरा हाल करते. नहीं, and also I believe Humsafar was what 11 years ago. 2011 में हुआ था, अब तो 12 साल होने वाले हैं शायद. Yeah, wow. The story, अगर वो रीमेक अब बनेगा, it's going to be very problematic. Because उस वक्त के लिहाज से कहानी ठीक थी. अगर वो आप
अब के वक्त में उसको बनाने की कोशिश करेंगे, उसमें 10 चीजें आपको बदलनी पड़ेंगी। एक चीज मैं बताऊं क्या बदलनी पड़ेगी, वो खत वो तो सिंपली एक टेक्स्ट, यू नो, लाइक इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया, मैसेंजर में मैसेज कर दिया। Yeah, you cannot redo Humsafar now because I mean it's WhatsApp आ गया, Instagram आ गया, हर चीज आ गई है, and you know mental health issues उसमें इतने थे, सारा was like she needed mental help. Yes, you know, तो अब वो चीजें आप you can't get away with stuff like that. इसलिए अब आपको थोड़ा सा उसको कंटेन करके लेके जाना पड़ेगा कहानी को। Do you think playing Sara, ठीक है, like did it like in a way was a roadblock to you, because आपने मुझसे भी कहा कि you know you've rejected a lot of roles, ठीक है, and purely on the basis कि वो negative roles थे, वो थोड़ा बहुत ऐसा लगा आपको कि it's kind of like Sara से मिलते जुलते या negative characters and all. Do you think you were typecasted? In a way, maybe yes, I would say that. But at the same time, when you've done a character like Sara from Humsafar and you get a cheap imitation copy of doing the same thing, you're not going to touch it. Of course. I think you've been very, very playing selective. the bad. Yeah, I love playing the bad guy because it gives you so much room to play. You know, आप expressions के साथ खेल सकते हैं, आप अपनी back story के साथ खेल सकते हैं. But give me a good reason to be the bad guy. Not just for the sake of it, you know. तो हमारे यहाँ जब कहानी लिख रहे होते हैं, because देखो कोई इंसान ये नहीं सोचता कि मैं विलन हूँ, हर कोई सोचता है कि मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। बिल्कुल। They're not gonna see themselves as a bad person. Give them that reason. आप उनको इतना रीज़न तो दें कि वो वाकई you know बिलीव करें इस चीज़ पे कि हाँ I am good और मेरे साथ जो गलत हो रहा है वो गलत ही है, ये नहीं कि मेरे साथ karma हो रहा है, you know. So that was the only problem I had because my first was Humsafar and then I did the Annie ki Barat simultaneously. So एक इतना serious और एक इतना funny. The typecasting came later because a lot of people were like, oh, you did this so well, you really do look like बाहर से पढ़ के आई है, बोलती अच्छा है, ड्रेस अच्छा करती है, you just have that thing about you. And I was just like, yeah, but I'm so much more than that. So much more than that. You know, so you can't just put me in a box and say कि हाँ आप गरीब रोल नहीं कर सकती. People said that to me. I got so offended. I was like, what do you mean गरीब रोल? नहीं कर सकती. It's a character. I'll transform myself. You know. Like I said, I myself said that you are the classy negative, you know. Yeah. I mean, I've done so many. मैंने 2-3 negatives उसके बाद भी किए हैं. और वो बहुत different shades के negative हैं. वो बाहर से पढ़ के नहीं आई हुई थी. वो एक middle class की लड़की थी. But you know, I transformed myself. So आप मुझे दें नेगेटिव रोल्स, लेकिन उसके साथ एक अच्छा सॉलिड स्टोरी भी तो दें, कैरेक्टर भी तो दें. एंड यू माई सेल्फ लाइक इन द बिफोर द इंटरव्यू की बात कर रही हूँ कि आपने मेंशन किया कि शी डजंट वॉच टीवी गाइस. For somebody who started the career on TV and you know, but why? I used to watch a lot of television because I wanted to keep up with the content. You know, I wanted to see कि क्या कहानियाँ बयान हो रही हैं, एक्टर्स कौन से हैं, कौन किस तरह का कैरेक्टर प्ले कर रहा है. You know, you just don't watch TV for the sake of it. Sometimes you want to learn as well. Yeah. And then since the past 4 years, I stopped because I was getting depressed. मैं जब भी TV देखती हूँ, रोना मचा हुआ होता है. औरत रोए जा रही है, हर प्ले में रोना. And I was like, मैं, you know, जिस टाइम में हम रह रहे हैं वो वैसे इतना डिप्रेसिंग है. दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू सी ऑन स्क्रीन. मुझे नहीं देखना रोती और. सो आई स्टॉप्ड वाचिंग टीवी एंड आई वाज लाइक मुझे नहीं देखना. हाँ, देयर वर प्लेज इन द मिडल जो कि लाइट प्लेज हैं, दे यू नो दे मेक यू लाफ एंड स्टफ एंड दोज आई सॉ. बट ये जो जितने भी इस तरह के प्लेज होते हैं बहुत सीरियस टाइप, आई एम लाइक what's one project that you watched and you were like this was an utter waste of my time and energy? मैं एक एपिसोड देख के समझ जाती हूँ कि ये मेरे मतलब का है या नहीं, you know. So I'm not gonna say names because it's just, you know, everybody You're has a nice their. person. I'm a nice person and I don't like to hurt people just to make a statement and you know, नहीं. मेरी चॉइस है, मुझे पता है कि मैं किस तरह की चीज़ मुझे पसंद नहीं आती. वो मैं एक एपिसोड देखती हूँ and then I'm like, yeah, I don't think मज़ा नहीं आ रहा, you know. So I just. Okay, there's one. Okay, reverse of that question. What is that one project you saw? I'm like, आपने बोला कि यार ये वाकई बहुत ही कमाल का है. मैंने पिछले रमज़ान देखा था हम तुम. That was With like Ramsha. Yes.
that was a fun play to watch. That was a fun play to That watch. was such a fun play to watch. And I, you know, because हमारी shoot timings ऐसी होती हैं कि if you're home, तो आप उस time पे देख सकते हो, वरना फिर वो निकल जाए तो निकल जाए. So I remember I just wrapped up shooting, and my mother was telling me, she was like, you have to watch it, it's so funny. And I thought कि funny पता नहीं कैसा funny होगा, शक्लें बना रहे होंगे, all of that. But they actually did such a wonderful job. Was amazing. Yeah, She's and she was so good. I even texted her, I was like, dude, you killed it. You killed it. Like, you know, so that was a play that I saw, and I really enjoyed it. Okay, I think I would like to see you in a Ramzan play, you know. I did a Ramzan play. I did Pakistan. Yes. Yeah, and I did that because I was so sick of the crying thing, and it was such a different thing to do because Refreshing. yeah, also because she was very the high Allah and all of that, and I've never done that before, so I was like, okay, you know, this should be fun, and it was a lot of fun. मुझे बहुत मजा आया वो play करने because I really got to exaggerate and everything, and I thought I was super exaggerating. Turned out I wasn't, and my director Ali Hassan was like, नहीं और ज़्यादा. I was like, really? And that's when I realized कि you know मैं काफी I'm very composed. So for me to break out of that, it took a lot, but it was a lot of fun. I'm going to move to a personal question, and I would say that sometimes there are a lot of speculations on social media regarding relationships and everything. एक तो एक चीज़, I mean, like I would say tabloid journalism के मतलब you know they even kind of like zero on you और देखते हैं कि आपने किसको unfollow किया, किसको किया, they even check and all, you know. And if there's like a rumored breakup, then there's a comparison कि you know कि वो pictures delete कर दी हैं या लगा दी हैं like that, you know. So you've been victimized. Have you been a victim of that in any way? And do you feel that sometimes it just gets too much? कि मतलब they're crowding in on you, be it fans, be it audiences. I maintain a very safe distance from social media. I'm not very active. Aerial yoga videos only. Yeah, only I show the audiences the parts of my life that I feel like ये मैं दिखा सकती हूँ. मैं अपना काम दिखा सकती हूँ. मैं अपनी कोई skill दिखा सकती हूँ. मैं अपना workout दिखा सकती हूँ. You know, but I live life in the real world. I don't post about it. उससे होता ये है कि you automatically create like a distance. कि हाँ, आप इन 4 चीज़ों पे comment कर सकते हैं, आप इस चीज़ पे comment नहीं कर सकते. I believe आप जितना किसी को दिखाएंगे अपनी ज़िंदगी और बिल्कुल खोल देंगे, obviously लोग उस पे 10 तरह की चीज़ें, क्योंकि लोगों का काम ही यही होता है, you know. They say that they have the license. Yeah, to just say anything. Everything on every matter. चाहे वो कोई स्टेटमेंट हो, चाहे किसी का ब्रेकअप हो, चाहे वो किसी ने किसी को डिलीट किया हो या व्हाटएवर, बहुत ज़्यादा घुसना शुरू हो जाते हैं लोग आपकी ज़िंदगी में. सो आई थिंक आई मीन वी आर पब्लिक फिगर्स, बट मेरा पर्सनल बिलीफ ये है कि पब्लिक फिगर हूँ, आपके अब्बा की प्रॉपर्टी नहीं है, यू नो. और उसके लिए दिस इज़ द लाइफ आई हैव चोजन. आई मेक श्योर आई हैव अ ग्रेट टाइम विद माई फ्रेंड्स. वी गो आउट, वी पार्टी, you know, we do a lot of crazy things, but I don't post about it because I don't want my friends and me on social media. वो हमारा me time है, you know. So that's how I protect myself. आपको लगता है कि जब आपको कोई personal jeopardy होती है, like there's something that happens, you're going through something and it becomes public knowledge, तब ज़्यादा scrutiny बढ़ जाती है? Of course, because people, देखें, first of all, this is not journalism. This is people judging other people based on word of mouth. Word of mouth, for sure. या तो अगर आपने खुद कोई स्टेटमेंट दी हो कि जी ये हुआ है और इसकी ये वजूहात हैं और you know, वो एक अलग चीज़ होती है, वो आप खुद लोगों को बता रहे हैं. लेकिन जब आपने कोई ऐसी चीज़ होती है आपकी ज़िंदगी में जो आपने खुद, जिसके बारे में आपने कभी बात ही नहीं की और हर कोई बात कर रहा है, then it becomes a little, you know, क्यों जब मैंने कुछ नहीं बोला तो आप क्यों बोल रहे हैं, you know. And people nowadays, they will pick up on anything and they will make a drama out of it. Yes, वो अलग ड्रामा चल रहा होता है. वो एक अलग, उसने उसको ये कह दिया, उसने उसको, यानी छोटी छोटी बातों को पिक करके उनको you know out of proportion blow up कर देना.
Like I remember 2 years ago, I think I said something like, I was doing an interview and it was an Instagram pe interview. And this girl who was interviewing me, she was like, you know, what do you have to say to all the single girls out there? So I was like, you know, I said something like, you know, wait kar lo and live your life. Don't sit. कोई गलत बात नहीं है इसके अंदर. Dude, people got after me like, you hate marriage and आप कौन होती हैं लड़कियों को ये सिखाने वाली कि शादी नहीं करो. Bitter. I never said that. Oh goodness. So, you know, लोग इस तरह की बकवास करते रहते हैं. So, I don't think कि उसको मैं कभी भी seriously, if I read something about a fellow actor and actress, I don't believe it. Like बकवास झूठ बोल रहा है. Because that is what it is. It's 99% झूठ, and the 1% जो होता है जिसमें कोई सच्चाई होती भी है, वो उन्होंने खुद बोला होता है. You know कि हाँ इसके बारे में बात करें, तो फिर लोग बात करते हैं. So yeah, it's nuts. Talking about the assumptions that the general masses make, and एक बहुत ही common assumption ये होता है कि showbiz में शादियाँ बहुत कम चलती हैं, ठीक है? And मुझे लगता है कि that's unfair to say because शादियाँ वैसे भी चलें, अगर divorce rate अभी high हो भी रहा है and separations high भी हो रही हैं, it is showbiz में इसलिए because showbiz is like what you call नुमाइश की जगह है, तो वहाँ पे ज़्यादा और prominent होती है. What do you have to say about that? देखिए, I don't believe कि divorces only take place in the entertainment industry. Absolutely not. हाँ, डिवोर्स रेट बहुत हाई हो गया है. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल यू नो जिन्होंने शादियाँ की थी और वो शादियाँ टूट गई और उनका इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है. या इंडस्ट्री की इसलिए हाईलाइट होती हैं बिकॉज हमारी शक्लें सबको पता है. यू नो सम रैंडम पर्सन गेटिंग डिवोर्स, दैट्स नॉट गोना मेक द न्यूज़, चाहे उसके पीछे कोई भी रीज़न हो. सो इट्स लाइक आई सेड, पीपल आर गोइंग टू जस्ट ट्राई एंड you know, क्या कहना चाहिए, अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए उनको आप कुछ भी बोल दें वो उसकी न्यूज़ बना देंगे. और हम इंडस्ट्री वाले तो वैसे ही बदनाम हैं हर चीज़ के ऊपर. हम बदतमीज़ भी हैं, हम जहन्नुमी भी हैं, हम यानी सारी बुराइयां हैं हम में. यू नो सो आई देखना भी सबसे ज़्यादा हमें पसंद करते हैं, लेकिन सो आई डोंट इवन कंसिडर दीज थिंग्स. मैं किसी का ओपिनियन नहीं मैटर करता सिवाय मेरा खुद का क्या नज़रिया है, मेरे लिए वो सही है. बाकी रैंडम लोग क्या कह रहे हैं या क्या सोच रहे हैं, आई थिंक आफ्टर वर्किंग फॉर सो लॉन्ग एंड हैविंग सीन द वर्ल्ड, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट. इट्स नॉट बिकॉज आप क्यों अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं चीज़ों में. आप 10 चीज़ें और कर सकते हैं. इतनी सी ज़िंदगी होती है. वो आप ये ढूंढने में लग जाएंगे कि किसका अफेयर है, किसकी डिवोर्स है, क्या हो गया. आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो. आर यू नॉट यूजिंग दैट टाइम? यू नो यूं वक्त गुजरता है. चलिए, जो आपका सवाल पे जो आपको इतना बैकलिश मिला था अनफेयरली कि सिंगल लेडीज़ को क्या एडवाइस करेंगे, आप मैरिड औरतों को दे दें काउंटर पे. मैरिड औरतों को क्या एडवाइस देंगी आप? मैरिड औरतें मैरिड इसलिए हैं क्योंकि यू नो दे आर ऑलरेडी डूइंग द राइट थिंग्स. सो आई एम इन नो पोजीशन ऑफ टेलिंग एनीबॉडी व्हाट टू डू. मैं सिर्फ ये कहूँगी कि आप जैसे भी हैं आप खुश रहने की कोशिश करें. क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे आप दूसरों को खुश रखेंगे. अगर आप खुद खुश नहीं रहेंगे तो कोई खुश नहीं रहेगा. जो बात So that's my advice to everybody, not just married or single people. So what do you have to बल्कि जब भी मैं इंटरव्यू करती हूँ किसी प्रिविलेज, मैं आपको प्रिविलेज कहूँगी, मैं और आप प्रिविलेज नहीं हैं in a way, you know, कि कभी इस प्रिविलेज पोजीशन से. तो what advice would you give to people, to women particularly who are stuck in ugly marriages? आपका क्या एडवाइस होगा? एंड दे आर स्ट्रगलिंग बिकॉज आई एम नॉट श्योर इफ यू आर एडेड इन एनी ऑफ द फेसबुक ग्रुप. देयर इज वन पॉपुलर ग्रुप. आई एम नॉट ऑन फेसबुक. यू आर नॉट ऑन फेसबुक? ओके, जितने भी आप अकाउंट्स फॉलो कर रहे हैं नवीन वकार के, मैं नहीं हूं फेसबुक पे. मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे. कभी मैं जाग जाती हूं गलती से और कुछ ट्वीट कर देती हूं. आई एम ओनली ऑन इंस्टाग्राम, सो आई हैव नो आईडिया. आई वाज रेफरिंग टू सम ऑफ द फेसबुक ग्रुप जो कि ऑल वुमेन ग्रुप्स होते हैं. वहां पे अगर आप कभी देखें, आप पोस्ट पढ़ें, तो आपको वाकई आपका दिल अजीब हो जाता है कि यार देयर आर लॉट ऑफ वुमेन हु आर स्टक इन सच बैड मैरिजेस एंड दे आर स्ट्रगलिंग जस्ट फॉर द सेक दे हैव टू मेंटेन अ मैरिज, टू सस्टेन अ मैरिज. तो व्हाट एडवाइस, what word of strength would you give to such women who are stuck in such positions? देखिए, मैं ये कहूँगी कि सिर्फ ये सोचकर शादी चलाने की कोशिश किए जाना कि हाय लोग क्या कहेंगे या यू नो हाय मैं कहाँ जाऊँगी. I understand that for a lot of women in this country, it is very difficult to get a divorce and then move back home with their parents. कुछ parents होते हैं वो कहते हैं नहीं हमने शादी कर दी, हमारा काम खत्म, जाओ अपने आप को खुद संभालो. And they pressurize the women कि नहीं तलाक लेने की ज़रूरत नहीं.
आई वुड से कि देखें अल्लाह ताला ने ज़िंदगी एक ही बार दी है, अगर आपका शौहर आपकी इज्जत नहीं करता तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर रिस्पेक्ट फाउंडेशन है ना, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट। मैं इतनी दफ़ा मैंने सुना है कि औरतों पे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं घरों में रहते सामने रहते हुए, यू नो, एंड इट्स बियॉन्ड मी कि यार नहीं, अगर आपका शौहर आपकी इज्जत नहीं कर रहा तो फिर देयर इज़ नो पॉइंट, बिकॉज औलाद कल को बाप को देखेगी कि बाप हमारी माँ से कैसे बात कर रहा है, वो भी आपकी इज्जत नहीं। बहुत अच्छी बात की आपने। सो एक चेन रिएक्शन क्रिएट होता है। तो अगर आपको लगता है कि सिर्फ आप दुनिया के खौफ से कर रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए। दुनिया के लिए आप आज तमाशाएं, कल कोई और होगा। सो यू नो इट्स पॉइंटलेस। दुनिया में कोई किसी को कुछ दे नहीं रहा। सो दुनिया की आप सोचनी छोड़ दें, बिकॉज दुनिया आपको बिठा के खिलाएगी नहीं। नोबडी केयर्स। तो अपने बारे में सोचिए, अपनी औलाद के बारे में सोचिए। सो दैट्स आई थिंक ऑल आई कैन से। इसके थोड़ी हिम्मत, हाँ सफ़र बहुत टफ होता है, बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको इस ज़मीन पे पैदा किया है तो उसने आपकी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा होगा ना। तो जिसने पैदा किया है वो खिलाएगा भी। तो बस बिस्मिल्लाह करके अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करें और बैठ के रोने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल रोने की ज़रूरत नहीं, नवीन ने बोल दिया भाई। कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा नवीन, आई सॉ karma. It was karma. Oh man, it was like refreshing. It was actually, I was like, चलो यार कुछ different देखा बहुत time बाद यार, मुझे बहुत खुशी हुई. And now we have Daag Dil as well on screen, ठीक है? And you said that you have 2 more projects coming up. Let's talk about Daag Dil. How did it pan out for you? Daag Dil, I started earlier this year. We shot it, and वही पुरानी कहानी. I was told that a certain cast would be in it, and जब play sign हो गया, cast बदल गई. Really? Yeah. अच्छा तो Which मुझे is not the first time this has happened to me. देखिए, अच्छा मुझे जब when you're signing something, आपके पास कोई clause नहीं होता, like इसमें आप अपने artist कोई clause नहीं करवा सकता कि यार Now I will. Now she will, you know. You know, you still learn. मैं अभी तक सीख रही हूँ चीज़ें. But I had a great time working with everybody on the team, you know. But there's only so much that you can control as an actor. कभी कभार we do our best. लेकिन जब वो प्रोडक्शन वाला हिस्सा एंटर होता है और फिर एडिटिंग आती है और म्यूजिक आता है, तो it turns out to be something जो कि you're like, oh my god, this is not what I was told. So दाग दिल का भी कुछ ऐसा ही scenario हुआ मेरे साथ, because I had thought a completely different thing for my character, but वो बन के कुछ और निकला है. You're not happy with it, how it has been? I'm never happy with anything that I do. I always have problems with it because I'm like बेहतर हो सकता था. बेहतर हो सकता है. I think आप perfectionist है मेरी तरह. They're like और बेहतर हो सकता है. Yeah, I'm the लीचर्ड इंसान जो कि डायरेक्टर कह रहा होगा बस हो गया ना. I'm like एक दफा और करने. I know I can do a better job. So वो करने देते हैं. Most of them करने देते हैं. Most of them do, but obviously जब आपके पास 3-4 टेक्स होती हैं तो वो अपना फेवरेट ही लगाते हैं, चाहे आपको लग रहा हो कि नहीं ये नहीं, कुछ और लगना चाहिए था. But yeah, दाग दिल by the end of the day, you know, it was a project that came to me, और वो 5 जो बहुत ही फारिग प्रोजेक्ट्स थे उनमें से एक कैरेक्टर ऐसा था कि I was like, yeah, I can do this. This would be like a fun thing to do. Also, I didn't cry in it, so that was a great thing. Okay. You know? Wow. Yeah. That's like what you call an achievement in a way. कि रुलाया नहीं. हर चीज में ग्लिसरीन लगा. एक पॉइंट आता है आप इंसान हो यार, नहीं दिल कर रहा रोने का, और इतनी स्टूपिड चीजों पे कौन रोता है? You know, so what's the stupidest thing that they made you cry on? इस प्रोजेक्ट में नहीं, पिछले प्रोजेक्ट में I had to do a scene where वो बैठी हुई है और एकदम से उसको याद आती है कोई पुरानी सालों पुरानी बात, वो धाड़े मार मार के रो रही है. I was like, no one does that, you know, unless खुदा ना खास्ता आपकी फैमिली में, you know, आपके पेरेंट्स को कुछ हो गया हो, या तो वो आप सोच के एकदम से रोना. I was like, क्या क्यों रो रही है ये? वैसे तो इतनी स्ट्रॉन्ग और वो बन रही है, रो, but there is like a way, you know, like हल्का फुल्का and all of that. But yeah, that was one thing that made me take up this project कि मुझे रोना नहीं पड़ा इसमें. रोना नहीं पड़ा. मेरी आँखें बच गईं ग्लिसरीन के डाउसिंग से and all of that, because it's too much crying. As a woman, I can't take it, and I'm done endorsing it. You know, there इतनी कहानियाँ हैं, इतनी औरतें हैं जिनके साथ अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, या सोसाइटी में इतने इश्यूज हैं, आप उनके बारे में बनाइए, you know, कहानियाँ उनके बारे में लिखें.
रोए जा रही है औरत, या तो हस्बैंड के पीछे रो रही है, या मंगेतर के पीछे रो रही है, कज़न जिससे शादी नहीं हुई उसके पीछे रो रही है. You know, it's kind of getting now ridiculous. Because आप अगर चैनल चेंज करें 8 और 9 बजे का स्लॉट, सब Dedicated to women crying. they're all crying. It's all about the same thing. I think मुझे कुछ लगा कोई विसीरियल ड्राइव है, लोगों कुछ लोगों को ग्रेटिफिकेशन, खुशी मिलती है औरतों को रोता देखते हुए. मुझे लगता है इट्स लाइक, एंड इवन women also want that. No, मैंने बहुत कोशिश की, मैंने आइडियाज पिच किए हैं चैनल्स को, and they were like, नहीं, जब तक औरत रोएगी नहीं तो रेटिंग नहीं आएगी. And I'm telling you, this is a direct quote, by the way, from really like high ups जो Top notch level. Yeah, and उसके बाद तो मैं चुप ही कर गई ना. I was like, अब मैं मज़ीद क्या अच्छा, आपको लगता है there is truth to that कि मतलब वाकई अगर रोते नहीं है तो रेटिंग नहीं आती? मुझे एक बात बताएं, आप पिछले 10 साल से एक इंसान को एक ही खाना खिला रहे हैं, दाल चावल दाल चावल दाल चावल. एक दिन आपने उसको कुछ और दे दिया, या चिकन दे दिया, या whatever. He's gonna eat it. He's gonna be like, ये क्या है? मुझे ये नहीं, मुझे दाल चावल ही चाहिए. It's a comfort thing, you know. And then finally when you were नहीं, वो खत्म, अब ये देखो, ये खाओ. हम अपनी ऑडियंस को ट्रेन करते हैं. As a TV channel owner, as a production house, as content creators, you have the biggest platform to educate your people. अब पहले तो national television, अब तो international level पे हो रहा है. आप जो कंटेंट बना रहे हो वो पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी देख रहे हैं. और अब तो हमारे ड्रामे पिछले 5-6 साल से डब होके डिफरेंट लैंग्वेजेस में देखे जा रहे हैं. Why can't you feed your people something good? Why can't you? This is not an excuse. And now when somebody come up with a better says it to me, excuse. Yeah, you know, या तो कहें कि नहीं जी हमारे पैसे इससे वसूल होते हैं. Understood, you know, I get At least it. be open about it. झूठ तो ना बोले, बिकॉज आपकी ऑडियंसेस पागल नहीं है. द एज ऑफ Amazon Prime and Netflix and Vudu and Hulu and HBOs and people know everything. आप जो उनको ये दिखा रहे हैं कंटेंट, people are watching Korean soaps now. They're watching Swedish TV now. They're watching Danish series now. European series. Portuguese में WWE. Yeah, they're watching these amazing shows. Yeah. तो आपको क्या लगता है कि आप उनके साथ ये दे रहे हैं कंपैरिजन के लिए, तो आपको खुद शर्म आनी चाहिए. You said that you have 2 more interesting projects coming up. Yeah. Yeah, and can we get? I know that you cannot reveal much, लेकिन आप थोड़ा बहुत reveal कर सकते हैं because I'm excited now. I'm really excited. हाँ. I did 2 projects for Green TV, and उनका अभी test transmission चल रहा है. And one of them is a series alongside Zahid Ahmed. Oh. And I worked with him for I the think first he was time. in Karachi. Yeah, And we that's shot when- here yeah. and we shot in Islamabad as well. And it's going to be a very interesting one because Yeah. it's something that I've never done before. Okay. It's a non-linear kind of storytelling situation. And I had such a great time. But then again, उसको भी shoot करते करते it's been 1.5 साल. And you know, बहुत सारी चीजें बीच में रुकी. And then COVID happened. Oh and then goodness. अच्छा, COVID से delay होता Yeah, आ रहा है. we started this 2020 के end में. 2020 के end में शुरू हुआ, फिर अच्छा. रुक गया, फिर 2021 के middle में हमने थोड़ा सा काम किया, फिर रुक गया. But that is one script that when I read it, I was like, wow, dude, like, are people even gonna understand this? आप उनको एकदम से कैसी चीज़ दिखा रहे हैं. And plus working with Zahid, it was a lot of Zahid is fun. an amazing actor. Very very He's amazing. so good. Amazing. एक ऐसा कैरेक्टर जो आप क्या चाहती हैं कि आप जरूर करें प्ले? Yeah, some action-packed thing. Action. Okay, yeah, because she kickboxes, guys. Yeah, I'm very athletic. I'm very active as a human being, and you know, मुझे बहुत शौक है कोई ऐसा part play करने का. And I think कि it would be something of a dream come true, Okay. like an action hero or something like that. Oh, Because यहाँ पे ये chances औरतों को नहीं मिलते. जो साफ सी बात है. You know, बड़ा डिफ़िकल्ट होता है टू बैक दैट रोल. और वो इतना competitive इसलिए भी होता है क्योंकि 2-3 साल में कोई एक पार्ट ऐसा होगा और उस पर बेचारी सारी औरतें कोशिश कर रही होती है कि हमें मिल जाए. अगर इस तरह के रोल्स बढ़ने शुरू हो जाएं तो यू नो यू कैन सी, सिर्फ मैं नहीं, आई थिंक
30 और दूसरी एक्ट्रेसेस हैं who will want to and who will. You are very positive energy being with you. Yeah. run away from people who जिनसे मुझे जरा सा भी negative अच्छा, कुछ what if आ अगर रहा आप होता है. इंटरव्यू के लिए आए, अगर मैं बहुत आपको नेगेटिव एनर्जी रेडियो कर रही होती तो आप My energy would have been different. Okay. You see, the thing with energies is that you exchange it with people, right? आप नोट करें कभी आप किसी ऐसे 4 लोगों के बीच में बैठ जाएं जो बहुत ही नेगेटिव सोच रखते हैं या 10-15 मिनट आधे घंटे के बाद आपको लगेगा आप भी नेगेटिव हो रहे हो, डिफ्लेट हो जाओगे आप. Yeah, because you know this is how it works. मैं मेरी जिंदगी में जितने भी नेगेटिव लोग थे मैंने उनको ऐसा कटाया है. Like, dude, I don't want. मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग अपने इर्द गिर्द because I believe कि खुश रहना is so difficult. I'm happy because I'm blessed. I'm living in a house with my parents and I have these 2 dogs and I'm comfortable and I'm playing with them and so आप reminders अपने आप को देते रहें कि यार ये भी तो है, इसके बारे में कुछ क्यों नहीं हो रही मैं, you know, why do I have to think about कि मेरे पास वो फलानी चीज़ नहीं है इसलिए मैं आज खफा होंगी. Be happy for what you already have because you know that's how it is. That's how it is. Yeah, so I believe in that. I like to see those dogs though someday. Absolutely, you're most welcome to come over. All right. Yeah. Sure. Thank you.